आइए हम लोग फिर से प्रसन्नता के साथ बहुत ही खुश होकर के उस शिक्षा को स्वीकार करें जिस शिक्षा को महाअवतार बाबा ने दिया। महाअवतार बाबा एक ऐसे अवतार जो सभी अवतार के अवतार, उनको प्रेम करने की सामर्थ्य असीम अनंत, और इसी वजह से अपने उसी शरीर में बने हुए जिसमें आए थे वो, जैसे कोई माँ हो, पिता हो, आजा हो, आजी हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, जब इतना प्रेम करते हैं बच्चों से तो उनसे अलग होना नहीं चाहेंगे, शरीर छोड़ना नहीं चाहेंगे, मरना नहीं चाहेंगे। तो याद रखिए महाअवतार बाबा का प्रेम अनंत और असीम, इसीलिए अपने उस रूप को बनाए हुए हैं। तो उनको पता है हम किसको क्या शिक्षा दें। जैसे हर उम्र के लोग हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, नया बच्चा भी जन्म लिया है, तो उसको क्या खाना चाहिए। 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, फिर ऐसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो उसका खाना पीना फिर क्या होगा, उसको रहन सहन कैसे होगा, वो बदलना पड़ता है। ऐसे इस पृथ्वी पर कितने तरह के मन है, बुद्धि है, कितनी तरह के जीवात्मा हैं। एक एक मनुष्य का जो अस्तित्व है एक विशिष्ट जीवात्मा है। और जीवात्मा कहाँ रहती है? अपने अंदर हर जगह रहती है, उंगली में भी है, हाथ में भी है। इसलिए कोई भी एक कोशिका निकाल लीजिए, चाहे कोई चमड़े का एक अंश लीजिए या कुछ भी लीजिए, उससे आप एक मानव बना सकते हैं। चाहे आप नाखून ले लीजिए, जो नाखून जो काट करके फेंकते हैं आप उसको ले लीजिए, उसके एक अंश को लेकर के हम एक रूप बना सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अंग के प्रत्येक अंश में जीवात्मा का वास है। जहाँ जीवात्मा है वहीं हृदय है, वहीं मन है, वहीं बुद्धि है, वहीं सब कुछ है। इस चीज को जब स्वीकार करते हैं तो सिर से पैर की उंगली तक जितने भी अंग हैं सभी का महत्व बराबर है, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं है। कोई अंग छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे पैर अधिक लंबे हैं, हाथ नहीं है, हाथ छोटा है पैर लंबा है। एक है, इसको कहते हैं छोटी अंगुली, बीच वाली सबसे बड़ी अंगुली। ये नामकरण गलत है। जहाँ हम नामकरण करते हैं छोटा और बड़ा के रूप में, कम और अधिक रूप में, मायावी नाम है, उससे बीमारियां आती हैं। जब नामकरण करेंगे कि छोटी अंगुली है, बीच वाली सबसे बड़ी अंगुली है, अंगूठा सबसे मोटा है, छोटी अंगुली सबसे पतली है, इस तरह से इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या गलत है। हम गलत जान करके बोले या अनजाने में बोले, उसका परिणाम क्या होता है? डर प्रकट होती, भय प्रकट होता है, चिंता प्रकट होती है। तो सिर से लेके पैर की अंगुली तक इसमें एक ऐसा वातावरण बनेगा, उस वातावरण में क्या चीजें पनपेंगी, इसमें वह चीजें आएंगी जिसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारी हड्डियां हैं, हर चीजें बढ़ती हैं अपने अंदर। इसे वृद्ध का मतलब बढ़ना, हड्डियां बढ़ने लगती है तो 2 हड्डी है, ये बढ़ते बढ़ते आपस में ये सट गई। तो इतना न बढ़े कि एक दूसरे को बाधा डाले। पता चला घुटने की हड्डी इतनी बढ़ गई, टिबिया फिबुला है, ये फीमर है, बीच में पटेला है, ऐसे बढ़ गई कि आपस में सट गए, अब चलने में दिक्कत होने लगी। तो जब हम महाअवतार बाबा की शिक्षा को स्वीकार करते हैं तो जो चीज अनावश्यक बढ़ती है, जैसे हड्डी अनावश्यक बढ़ गई, कहीं मांसपेशी अनावश्यक बढ़ गई, या अपने अंदर चर्बी फैट अनावश्यक बढ़ गई,
जैसे हड्डी अगर अनावश्यक बढ़ी तो होता क्या है, उस ठोस तत्व का रूपांतरण जल तत्व में हो जाता है, लिक्विड में होता है। फिर पता चला लिक्विड बढ़ गया, तब क्या होगा? अगर वो आवश्यकता से अधिक बढ़ गया तो किडनी खराब होगी, फेफड़ा खराब होगा। जहाँ से ये ब्लड पंप होता है, एक मस्कुलर मांसपेशियों का स्ट्रक्चर है जिसको लोगों ने नाम रखा है हृदय। वो हृदय नहीं है जो महातार बाबा ने कहा है। इसका बढ़िया नाम क्या है कि ये मांसपेशियों का एक पंपिंग मशीन है। ये याद रखिए कि जब अपने अंदर ये द्रव बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है, तो हमारी किडनी को दिक्कत होने लगती है, फेफड़ा को दिक्कत होती है, जो खून को पंप करता है उस मशीन की दिक्कत होती है। हर जगह दिक्कत ही दिक्कत होने लगती है। जब महातार बाबा की शिक्षा को अपनाते हैं, जो तरल और द्रव आवश्यकता से अधिक हो गया, तरल और द्रव की मात्रा जब जरूरत से ज्यादा हो गई, आवश्यकता से अधिक हो गई, तो उसका रूपांतरण हो जाता अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व का काम क्या है? हर जगह पर शरीर को गर्म रखना। अग्नि तत्व का काम क्या है? सबको मिला के रखना। अग्नि तत्व सबको मिलाती है। जैसे कहीं पर आग जल रही हो, लकड़ी को डालिए तो लकड़ी आग में बदल जाएगी। उसमें हम बैठ जाए तो हमारा पूरा रूप ही अग्नि का रूप हो जाएगा। अग्नि तत्व करता क्या है? सबको अपने में समेटता है, उसके अंदर व्यापकता है। पता चला अग्नि तत्व अधिक बढ़ गया। अग्नि तत्व का अधिक बढ़ने से चमड़े को अग्नि तत्व में सिमटने लगा तो चमड़ा ही गायब होने लगा, मांसपेशियां गायब होने लगी, हड्डियां गायब होने लगी, सब चीज गायब होने लगा। अग्नि तत्व की आवश्यकता से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जितना आवश्यकता है उतना रहे, बाकी अगर बढ़ता है तो अग्नि तत्व का रूपांतरण वायु तत्व में होना चाहिए। चलो वायु तत्व में रूपांतरण हुआ और वायु तत्व अधिक बन गया, तब क्या करेगा? फिर तो अंदर में बहुत दबाव डालेगा। देखिए हवा का दबाव कितना होता है। हवा के दबाव के कारण ज्वार भाटा आता है। हवा का दबाव हो तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। आंधी तूफान में देखिए जब हवा का दबाव अधिक होता है, पता चला फेफड़ा ही गल गया। एक्सरे कराए, सीटी स्कैन कराए, पता चला फेफड़ा आया ही नहीं, कोलैप्स कर गया है। तो हम क्या करें कि जो वायु तत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ गया वो न बढ़े। बड़ा आसान है। महातार बाबा की शिक्षा को अपनाइए, अभ्यास करते जाइए। जो वायु तत्व अतिरिक्त है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वायु तत्व रूपांतरित हो जाता है आसमान तत्व में। आसमान तत्व है तो व्यापकता आ गया। जैसे आसमान विशाल है, बड़ा है, वैसे अपना तत्व व्यापक हो गया। लेकिन अगर आसमान तत्व इतना व्यापक हो गया, इतना प्रभावशाली हो गया कि सब तत्वों को आसमान में ही बदलने लगा, पता चला पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व सब आसमान में बदलने लगे, तब क्या होगा? ये सिर से पैर की उंगली तक ये रूप बदलने लगेगा। पता चला हड्डी गायब होने लगी, मांसपेशियां गायब होने लगी, खून गायब होने लगा, फेफड़ा गायब होने लगा, सब चीज गायब होने लगा। क्योंकि आसमान तत्व बड़ा विशाल है, सबको समेट लेता अपने में। देखिए पूरा आसमान तत्व में आकाश गंगा है, तारामंडल है, सौरमंडल है, क्या क्या है। तो हम क्या करें कि आसमान तत्व की अतिरिक्त मात्रा भी रूपांतरित हो जाए। किसमें रूपांतरित होगी? जिसको सूक्ष्म आसमान कहते हैं, सूक्ष्म आवाज कहते हैं जिसको कान नहीं सुन पाता है, सूक्ष्म दृश्य कहते हैं जिसको आंखें नहीं देख पाती है, सूक्ष्म वह तत्व जिससे गंध की अनुभूति होती है, स्वाद, वो सूक्ष्म है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको तन्मात्रा कहते हैं। जो आसमान तत्व है उसका रूपांतरण तन्मात्रा में हुआ, और तन्मात्रा का जब रूपांतरण
और ऊपर की तरफ आप वही अभ्यास करते जाइए, तो इंद्रियों की, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों की उसकी शक्ति बढ़ गई। पता चला ज्ञान इंद्रिय की, कर्म इंद्रिय की शक्ति इतनी बढ़ गई कि मन को गुलाम कर लिया, बुद्धि गुलाम कर लिया। तो ऐसे होगा जैसे दुर्योधन थे, दुर्योधन की गुलामी कौन किया? धृतराष्ट्र। तो हस्तिनापुर तहस नहस हो गया। जब हमारा मन और बुद्धि गुलामी करता है इंद्रियों की, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, तो ये हस्तिनापुर सिर से पैर की अंगुली तक, इसका नाम हस्तिनापुर है। कारण क्या है? जिसके नाम की वजह से जिसकी गाथा लिखी जाए। मान लें कि आप इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग का ज्ञान से आपकी गाथा लिखी जाती है कि आप ये करते हैं, वो करते हैं। तैसे याद रखिए, मान लें कि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का जो ज्ञान है उसकी वजह से आपका नामकरण होगा कि आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ेगी, इंजीनियर जुड़ेगा, ये सब चीज। इस तरह से याद रखिए। तो हमारी इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति इतनी न बढ़े कि मन गुलाम हो जाए, बुद्धि गुलाम हो जाए, अपना जीवात्मा गुलामी करने लगे, अपना हृदय की शक्ति, प्रेम शक्ति उसका गुलाम हो जाए, तब तो हाहाकार मचेगा। सिर से पैर की उंगली तक हस्तिनापुर ये चकनाचूर हो जाएगा। फिर हम क्या करें? कोई चिंता नहीं, महातार बाबा की शिक्षा को अपनाते जाइए। तो ऐसा करने से होगा क्या? जो अतिरिक्त शक्ति है ज्ञानेंद्रिय की, कर्मेंद्रिय की, अतिरिक्त शक्ति का रूपांतरण हो जाएगा मन और बुद्धि में, चित्त अहंकार में। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जब बलशाली हो गया तो इसके बस में इंद्रियां ही होंगी। जब इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार के बस में होती तो खतरा रुक जाता है। लेकिन तभी खतरा बना हुआ क्योंकि मन बुद्धि दोनों माया के रूप है। तो हमारी इंद्रियां माया के वश में हो गई, तो माया का ज्ञान अधूरा होता है। तब क्या करना है? उसी अभ्यास को करते जाइए, तो आप देखेंगे बहुत बड़ी चीज होती है। फिर तो हमारा चित्त अहंकार बुद्धि मन इंद्रियां सब कुछ ये जुड़ गया परम ज्ञान से, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं। जब ये ज्ञान पुरुषोत्तम शक्ति से जुड़ गया, फिर तो पूछना क्या? फिर तो अनुभव होने लगा कि हम परब्रह्म की संतान हैं। अगर परब्रह्म की संतान है, अनुभव हुआ, तो हमारा क्रियाकलाप परब्रह्म की तरह ही होगा। परब्रह्म का क्रियाकलाप क्या है? सृजन, ब्रह्मा की, विष्णु, शिव, इनसे संबंधित समस्त क्रियाकलाप परब्रह्म का ही क्रियाकलाप है। तो आप जो चाहेंगे वो बना लेंगे। उसको बनाने के बाद जब तक चाहेंगे उसकी रक्षा करेंगे, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। सिर्फ मात्र एक चीज को स्वीकार कर लेने से, महातार बाबा की शिक्षा। बाकी जितनी शिक्षा पद्धति आपको पता है, दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, अनेकों साइंटिस्ट हैं, ऐसे डॉक्टर इंजीनियर जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। आप आइंस्टाइन को देख लीजिए, आइंस्टाइन को समझ में आ गया हम कुछ भी कर लें, कितना भी नोबेल प्राइज क्यों न मिले। उनको मैन ऑफ द सेंचुरी कहा गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, गांधी जी हैं, गांधी जी इज द ग्रेट सोल फॉर ऑल सेंचुरीज, फॉर ऑल द टाइम। आइंस्टाइन तो एक शताब्दी के सबसे ऊंचे कहे गए। आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए क्या कहा? हर युगों के लिए सबसे आगे हैं, हर शताब्दी में सबसे आगे हैं। ये राइजेस सुपीरियर टू ऑल। वही तो परमहंस योगानंद कहे। परमहंस योगानंद महात्मा गांधी के गुरु थे। 1935 में जब परमहंस योगानंद भारत आए तो सबसे पहले महात्मा गांधी से मिलने गए। जब महात्मा गांधी से मिलने गए तो दिन था सोमवार, मंडे, महात्मा गांधी का व्रत था, मौन व्रत। तो लिख पढ़ करके वार्तालाप किए महात्मा गांधी। आपको 44 नंबर चैप्टर में मिलेगा, योगी कथामृत में। उसको पढ़िए तो आपको उसमें आगे मिलेगा।
तो महात्मा गांधी कहते हैं हमने किसी को गुरु नहीं बनाया, अच्छा कोई किसी को गुरु न बनाए, कि गुरु बनाएंगे तो उसके कहे अनुसार निर्देशों पर चलना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा हमें कोई ऐसा मिला नहीं जिसके निर्देश पर हम चलें, लेकिन आपसे मिलने के बाद हमें प्रेरणा हो रही है, हमें लाहिड़ी महाशय की क्रिया से दीक्षित कर दीजिए। तो परमहंस योगानंद गुरु हो गए महात्मा गांधी के। और ऐसे गुरु जो परम आत्मज्ञानी, ऐसा शिष्य जो बचपन से पैगंबर अवतार। तो महात्मा गांधी दीक्षा देने के बाद वहां पर जो 2-3 दिन रहे वर्धा में, उनको समझ में आ गया कि महात्मा गांधी तो अवतार हैं। तब महासमाधि में प्रवेश करने के पहले ठीक कहा, सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करें राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए। राष्ट्र में अगर गरीबी है, संसाधन की कमी है, कोई चिंता न करिए, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलिए, सभी संसाधन हो जाएंगे। गरीबी बाहर की मिटेगी, अंदर की भी मिटेगी। अंदर के धन को कहते हैं वाइटलिटी, इम्यूनिटी। महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने के बाद अपने अंदर की इम्यूनिटी, वाइटलिटी बढ़ेगी और बाहर की जो भी चीज चाहिए वो भी आएगी। इस तरह से परमहंस योगानंद ने महासमाधि के ठीक पहले ये संदेश दिया सबके लिए। तो संदेश हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो महात्मा गांधी के मार्ग पर कैसे चले? आप लोग प्रतिदिन जो अभ्यास करते हैं, महात्मा गांधी के मार्ग पर ही चलने का अभ्यास कर रहे हैं। महात्मा गांधी रिचार्जिंग रोज करते थे। भ्रूमध्य पर ध्यान, श्वास दर्शन, जो कान बंद करके आप लोग सुनते हैं, ओम वाइब्रेशन में ध्यान, ये महात्मा गांधी डेली करते थे। दीक्षा वाली क्रिया सब करते थे वो। तो आप लोग प्रतिदिन लगे हुए हैं, लेकिन अभी दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि भारत राष्ट्र के सभी लोग कैसे महात्मा गांधी को फॉलो करें। महात्मा गांधी अंत तक बोले कि चरखा चलाइए, चरखा चलाना बहुत आवश्यक है। तो क्या सबको चरखा चलाना चाहिए? चरखा 2 तरह से चलता है, एक अंदर में, एक बाहर। बाहर का चरखा चलाते हैं तो सूत बनता है, सूत को तागे के इकट्ठा करके कपड़ा बनाते हैं। अंदर के चरखे को चलने को दीक्षा वाली क्रिया कहते हैं। देखिए, सिर है गोल आकृति में और स्पाइनल कार्ड है। चरखा ऐसी तो होता है, एक राउंड व्हील होती है, एक होता लंबाई में हॉरिजॉन्टल, तैसे गोल गोल घुमाते हैं और फिर ऐसे तागे को फैला के फिर लाते हैं, ऐसे बार बार करते हैं। तो अपना सिर और रीढ़ है, सिर बार बार एकाग्र होइए, इससे मन को घुमाइए अंदर और बाहर, साथ में सिर और रीढ़ की अनुभूति करिए, सिर और अनुभव करिए, सिर की अनुभूति और करिए। ये रहा आंतरिक चरखा चलाने की बात। और जब दीक्षा वाली क्रिया मिल जाएगी तो चरखा चलाने की उच्चतम क्रिया है वो। इसके साथ साथ जिसको मौका हो, पर्याप्त रुई मिल सके, 1-2 घंटा ये तागा बनाने का भी काम करना चाहिए। क्योंकि भारत देश में जो टेरिन है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कपड़े बनते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन कॉटन का कपड़ा इतना महंगा है, कौन खरीदेगा? इतना महंगा कपड़ा कि आप खरीदने जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होता है। अगर घर में हम सूत काटने लगे, कुछ इकट्ठा करने लगे, तो धीरे धीरे करके साल भर में बहुत हो जाता है। तो एक आदमी को 3 सेट कपड़ा चाहिए, और ऐसा कपड़ा जो स्वास्थ्य वर्धक होगा, हमारी त्वचा के लिए अच्छा होगा, हमारे श्वास के लिए अच्छा होगा, पूरी बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो जहां तक संभव हो चरखा चलने का रिवाज शुरू होना चाहिए। और उन्होंने कहा क्या है महात्मा गांधी ने, ये मनु ने एक लाइन लिखा है
इससे महात्मा गांधी स्पष्ट रूप में कहते हैं राष्ट्र भक्ति का श्रेष्ठतम रूप है चरखा चलाना। जिसको थोड़ा सा आप विचार करके देखिए, घर में लोग अनावश्यक बैठे हुए हैं, बिना मतलब का टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन में ऐसी ऐसी चीजें आती है जिसको देखिए तो दिमाग खराब होगा। उतना देर हम 2 घंटा चरखा चलाने में लगाई, खाना खाने के बाद 2 घंटा सोया नहीं जाता है, खाना खा के कम से कम 2.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। तो उसमें कोई क्रिएटिव काम करिए, घर की सफाई करिए, या पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, परिवार में और लोगों की सेवा, या चरखा चलाइए। इस पर विचार करिए। जो भी महात्मा गांधी कहें वो सार्वकालिक है, कोई सामयिक नहीं है। उनका एक एक वाक्य हर युग के लिए है। वह अतीत के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, सब के लिए है। तो चरखा 2 तरह से चलाइए। एक है आंतरिक चरखा, आंख बंद करके सिर में एकाग्र हो जाइए और ईड़ का अनुभव करिए। तो सिर को पकड़ करके अनुभव करिए और मन को इसके अंदर गोल आकृति में घुमाइए। जब गोल आकृति में घुमाएंगे मन को, फिर पूरे रीढ़ में मन को ले आइए, फिर मन को ऊपर ले जाइए, फिर सिर के अंदर गोल आकृति में घुमाइए, फिर मन को रीढ़ के अंदर ले जाइए, फिर ले आइए। ये है आंतरिक चरखा चलाना। इससे बड़ा विकास होता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। आइए आपको हम 5 मिनट आंतरिक चरखा कैसे चलाएं इसका अभ्यास कराते हैं। इससे जानते हैं अपनी जो जीवात्मा है इवाल्व होती है, विकसित होती है। जीवात्मा के विकसित होने का अर्थ क्या है? उसकी समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ने का अर्थ क्या है? सबसे मिल करके रहना, सबको साथ लेकर के चलना। इसी का नाम है समझ। समझ का श्रेष्ठतम रूप भगवान कृष्ण ने योग के रूप में कहा है। इसे कहा कि हर व्यक्ति को योगी होना चाहिए। इसमें देखिए योगी कथामृत के, इसको जब आप खोलिए तो पहले चैप्टर में ही लिखा है। ये सार्वकालिक ग्रंथ है। क्या लिखा है? जितने तरह की तपस्या की जाती है, तपस्या में जो क्रियायोग का अभ्यास है श्रेष्ठतम तपस्या है। जो क्रिया का अभ्यास करता है योगी बनने की श्रेष्ठतम क्रिया में लगा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, जो तपस्या करते हैं और या जो ज्ञान किताब पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते हैं, या और काम कर्म करते हैं, खेत में काम, जानवर की सेवा, ये काम वो काम, उसमें लगे रहते हैं, ये सब में विकास होता है। लेकिन इन सब का लक्ष्य क्या है? योगी बनना। योगी क्या है? योग को अपने अंदर ले आना। योग में ई जोड़िए। ई का मतलब है इधर। योगी का अर्थ है योग के साथ आपने ई जोड़ा। ई है इधर। तो सिर से पैर की उंगली तक इसको योग की स्थिति में ले आइए। कैसे लाएंगे? पहले सिर से पैर की उंगली तक सारे अंग को आपस में जोड़ करके रखिए। कैसे रखेंगे? वही है आंतरिक चरखा चलाने की क्रिया। इसको थोड़ा अभ्यास कराते हैं, फिर इसको अंग्रेजी में बताएंगे। पहले हम लोग अभ्यास कर लें। आंखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. We are ready to practice spiritual spinning wheel activity within our own existence. अब हम आंख बंद करके अपने अस्तित्व के अंदर महात्मा गांधी का जो निर्देश है कि सभी को चरखा चलाना चाहिए, कैसे हम अपने अस्तित्व के अंदर में हम चरखा चलाने का अभ्यास करें। चरखे का आकार को देखिए। एक गोल आकार होता है, उसको घुमाते हैं। फिर एक लंबा आकार होता है, तो हाथ को बार बार लंबे आकार की तरफ ले जाते हैं, फिर वापस लाते हैं।
अपना रीढ़ एक लंबा आकार है, सिर एक गोल आकार है। दोनों हथेली से हम सिर को पकड़ें, दाहिने हथेली से सिर का दाहिना भाग, दाहिनी हथेली से दाहिना चेहरा, बाईं हथेली सिर के बाईं तरफ और बाईं गाल की तरफ। इस तरह सिर और रीढ़ जो गोल आकृति है, इसके अंदर मन को प्रवेश कराइए, इसके अंदर मन को घुमाइए, मन को इसके अंदर चलाइए। कल्पना करिए कि मन, बुद्धि, अपना हृदय की शक्ति, अपनी आत्म शक्ति सिर के अंदर गोल आकृति में ये भ्रमण कर रही है, परिक्रमा कर रही है। उसी के साथ साथ अपना रीढ़ कहाँ है अनुभव करें। सिर से लेकर के रीढ़ की रचना, रीढ़ की उपस्थिति की अनुभूति करिए। जब हम अपने सिर के अंदर मन बुद्धि सबको हम प्रवेश करा दिए, सब कुछ सिर के अंदर एकाग्र हो गए, उसके अंदर हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा कैसे कर रहे हैं? उसके अंदर किरणें घूम रही हैं, सफेद रंग का प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश, अनेक रंग के प्रकाश जो आंख बंद करके बाहर की तरफ देखते हैं। माथे के सामने जो दिखाई पड़ रहा है, ये प्रकाश की तरंगे सिर में परिक्रमा कर रही, सिर के अंदर एक घूम रही हैं। कल्पना शक्ति से इसका निरीक्षण करते हुए पूरे रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं, रीढ़ में और एकाग्र हो जाए। माथे के सामने आंख बंद करके जो देख रहे हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगी जो तरंगे हैं, सिर के अंदर ये तरंगे परिक्रमा कर रही हैं और साथ ही साथ ये तरंगे रीढ़ में अंदर प्रवेश कर रही हैं। रीढ़ के निचले भाग तक, कॉक्सिजियल लेवल तक वहां प्रवेश करके फिर ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ करके फिर सिर के अंदर समाहित हो रही हैं, फिर सिर के अंदर वो परिक्रमा कर रही हैं। यह दृश्य देखते हुए सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ इस प्रकार मोड़ेंगे हम कि मोड़ने में अच्छा लगे। ये सब करते हुए याद रखिए, आंख बंद करके माथे के सामने जो देख रहे हैं, अंधकार प्रकाश का अलौकिक दृश्य, रंगीन तरंगों का अलौकिक दृश्य। ये तरंगे सिर के अंदर परिक्रमा कर रही हैं, वहां से तरंगे उतर रही हैं, रीढ़ के अंदर नीचे तक जाती हैं, फिर ऊपर की तरफ आती हैं। एक तरफ यहाँ परिक्रमा चल रहा है, ये तरंगे सिर के अंदर परिक्रमा लगातार कर रही हैं। यही तरंगे रीढ़ के नीचे भाग तक आ रही हैं, फिर वापस भी आ रही हैं। ये सब अपने कल्पना शक्ति के द्वारा अनुभव करते हुए, देखते हुए सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ धीरे धीरे झुकाने का अभ्यास करें। ये अभ्यास करते हुए याद रखें कि हम महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया निर्देश कि चरखा चलाने से राष्ट्र का विकास होगा, तो सिर और रीढ़ राष्ट्र है, इसके विकास के लिए इस चरखा को चलाना आवश्यक है, जो हम सब चला रहे हैं। इस तरह हम और अच्छी तरह से याद रखें। फिर हाथ ढीला करें, नीचे लाएं। ये जो आपने अभ्यास किया, क्रिया योग के दीक्षा का लघु रूप है ये। इसको तो हम खुलेआम बता रहे हैं। जहां भी ये यूट्यूब लोग देख रहे हैं, सब तक ये मैसेज जा रहा है।
इसमें करना क्या, आंख बंद करके जो माथे के सामने दिखता है, इस सिर के अंदर इसको गोल आकृति में घुमाते रहिए उन रंगीन तरंगों को। एक तरफ घूम रही है, उसमें से कुछ तरंगे रीढ़ के नीचे जा रही हैं, आपके ऑक्सीजन पॉइंट तक कहीं फिर ऊपर उठ रही हैं। ये काम एक चल रहा है, दूसरा काम इसके अंदर परिक्रमा चल रहा है। ऐसे आप 15 मिनट करिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी, आपकी वाइटलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। जितने प्रकार के रोग हैं आपको लगेगा धीरे धीरे रोग खत्म हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, डायबिटीज ठीक हो रही है, मन का तनाव चिंता दूर हो रहा है। क्योंकि अभी इसको जब अंग्रेजी में बताएंगे हम जूम सेशन में, तो इसे पूरा अनुवाद हम अंग्रेजी में बताएंगे। ये अभी मैंने अंग्रेजी में इसको बताया नहीं है। याद रखिए, जब परमहंस योगानंद ने कहा सभी राष्ट्र को महात्मा गांधी को फॉलो करें, महात्मा गांधी यही लिखे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए चरखा बहुत आवश्यक है। और होली साइंस में क्या कहा गया है, जो श्रीमद् भगवद गीता में है कि राष्ट्र कहाँ है, इदम शरीरम, ये शरीर ही राष्ट्र है। इस राष्ट्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसमें पांडव पक्ष कौरव पक्ष एकत्र है। जब इसे हम चरखा चलाते हैं तो कौरव की प्रवृत्ति पांडव में रूपांतरित होती है, और पांडव की प्रवृत्ति और ऊर्ध्वमुखी होती है, परम ज्ञान को प्राप्त होती है। ये है चरखा चलाने की एक अद्वितीय विधि। इसको फिर हम आपको स्पष्ट करेंगे। हम याद रखिए, अगर परमहंस योगानंद, जो महातार बाबा ने एक अलौकिक घटना दिखा दिया, परमहंस योगानंद से कहा भी था महातार बाबा जी, जब परमहंस योगानंद एक प्रश्न किए, ठीक है हम अमेरिका जा रहे हैं चूंकि आपने कहा है, लेकिन एक दिन तो वहां से हमको जाना होगा, एक दिन हमको अंतिम समय में शरीर छोड़नी होगी, तब कैसे फैलेगा। तो कहा कि एक ऐसी घटना घटित होगी, आपके शरीर छोड़ने के बाद एक ऐसी घटना घटित होगी, क्रियायोग और तेजी से बढ़ेगा। कौन सी घटना घटित हुई? वही जो परमहंस योगानंद कि शरीर में कोई विघटन की क्रिया नहीं हुई, उनका शरीर वैसे ही बना रहा। जैसे 7 मार्च महासमाधि के दिन जिस प्रकार शरीर की रूपरेखा थी, 20 दिन के बाद भी वो शरीर उसी तरीके से बनी रही, उसमें कोई मरने का चिन्ह नहीं हुआ, कोई दुर्गंध नहीं आई, चेहरे की शक्ल में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई शुष्कता नहीं आई। यही तो घटना घटित होनी थी। परमहंस योगानंद जाने के बाद जब महातार बाबा की भविष्यवाणी के जाने के बाद एक ऐसी घटना घटित होगी, क्रियायोग और बढ़ता जाएगा, वो यही घटना थी। याद रखिएगा, जब परमहंस योगानंद के शरीर परिपूर्ण शुद्ध अवस्था में थी, पवित्र अवस्था में थी, ऐसी स्थिति में वहां से वाणी निकलती है, जितने भी राष्ट्र हैं महात्मा गांधी को फॉलो करें। महात्मा गांधी को फॉलो करने में वो कहते हैं मनुष्य कि चरखा चलाना और राष्ट्र के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। तो राष्ट्र निर्माण का 2 चीज आता है, सिर से पैर की उंगली तक ये राष्ट्र है, इसके निर्माण में चरखा चलाना बहुत आवश्यक है। इसको आंतरिक चरखा कैसे चलाएं, मैंने थोड़ा सा अभ्यास कराया, इसको और विधिवत कराएंगे हम। इसके करने से इस राष्ट्र में परिवर्तन होता है, इसमें डर खत्म होती है, अशांति दूर होती है, चिंता दूर होती है, इसके अंदर वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़ती है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी पता चलेगा, कुछ लोग घर में खाली बैठे हैं, उनको काम नहीं है, फालतू का चिंतन करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, राग द्वेष की चर्चा करते हैं। तो उनके लिए चरखा खरीद दिया जाए, थोड़ी देर चरखा चलाएं। अगर साल भर चरखा चलाया गया तो इतना उसका तागा निकलेगा कि साल भर में परिवार के प्रत्येक लोगों के पास 3 जोड़ा कपड़ा तो हो ही जाएगा। और हाथ से काते हुए सूत के द्वारा जो कपड़ा पहनते हैं वो चमड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। हमको चमड़ों की रक्षा करनी है। बाहर जो कपड़ा खरीदते हैं, जो कहते हैं कॉटन है, कॉटन शुद्ध नहीं होता, उसमें टेरिन मिलाए होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हमको तो मिलता नहीं।
शुद्ध कॉटन मिलता खादी भंडार में, बहुत महंगा देते हैं। हमारे देश में सबको कपड़ा सुव्यवस्थित हो सके, इसलिए घर में अगर एक पूरा परिवार होना चाहिए, जिस परिवार में जो लोग खाली हों और किसी बहुत बड़े कार्यों में न लग रहे हो, 1-2 घंटा चरखा चलाने काम करें। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं, चरखा पर्याप्त मात्रा में आश्रम में रहेगा। कोई अपने घर 1-1 ले जाए, 2-2 ले जाए, 1-2 घंटा काम करें, उससे जो तागा निकलेगा ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसका कपड़ा भी बनेगा। कपड़ा बन जाए तो प्रत्येक व्यक्ति 3 सेट रखे, अधिक आवश्यकता नहीं है, उसको पहने। इससे चमड़े का स्वास्थ्य बढ़ता है। कितना अच्छा है, चमड़ा हमारे साथ है तो इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। चलो हम सिल्क का कपड़ा पहनाएंगे। सिल्क क्या होता है? कीड़ों को मार करके बनता है। सिल्क के कीड़ों को मारिए तो सिल्क का कपड़ा मिलता है। क्यों मारेंगे कीड़ों को हम? सबसे अच्छा है कॉटन का पेड़ लगाइए, उसकी रुई निकलने में कोई उसको कष्ट नहीं होता है। उसका फल पक गया, रुई बाहर निकल आई, उसको लेकर के आराम से सूत बिनिए, साल भर में इतना हो जाएगा, धीरे धीरे सबके लिए कपड़ा हो जाएगा और चमड़ा एकदम खुश रहेगा। वाह, धन्य है हमारी भाग। ये चमड़े की जीवात्मा क्या कहती है? मेरी आत्मा वहीं जाए जहां पर शुद्ध प्रेम हो, जहां पर ऐसा प्रेम हो जो पवित्र प्रेम हो, जहां सच्चा प्रेम हो। तो चमड़ा कहाँ जाएगी? हमारे पास आएगी। इसको जब शुद्ध प्रेम करेंगे, ऐसा कपड़ा पहनाएं जिस कपड़े में कोई दिक्कत ना आए, चमड़े में दिक्कत ना आए। तो इसको आप सुनते जाइए, सुनते सुनते दिमाग सेचुरेट हो जाएगा, फिर एक काम होने लगेगा। ये अब देखिए जूम सेशन होने जा रहा है। राइट, अब जूम सेशन होने जा रहा है। जो मैंने हिंदी में बताया उसको अंग्रेजी में बताएंगे। I was giving the message of highest teaching of Mahatma Babaji in the Hindi language. Now I'm going to relate the same thing in English. That will be for all who are joining this Zoom session. We are very fortunate at the bank of Holy Ganga, at the bank of Trivedi and Sangam. We are celebrating Holy Congregation. In that we are learning the highest teaching of Mahatma Babaji. What is the highest teaching of Mahatma Babaji? Try to listen from Paramhansa Yogananda. He advised how to follow teaching of Mahatma Babaji. And he requested, he advised, he requested with all humbleness that all nations of this planet, they should follow Mahatma Gandhi. Paramhansa Yogananda, when he was ready to go USA, America, for imparting this teaching of Mahatma Babaji, and he asked question from Mahatma Babaji. Paramhansa Yogananda was not having thought and any aim to go there. He wanted to live with Mahatma Babaji. Mahatma Baba said, no, this is not time and do not try for it. You go to America, you will be helped. Then Paramhansa Yogananda, he asked something. A time will come that I have to depart. I have to leave. Then how it will spread? Then Mahatma Baba said, during your departure moment, there will be great spiritual happening. That will give an example that this teaching, Kriyayoga, is the highest teaching. Then what happened at that time? Thus at the time when Paramhansa Yogananda was ready to leave this physical universe, to enter into astral universe, and some great phenomena happens. His body became fully purified and he gave the message
to all people because Paramhansa Yogananda was having greatest love for all. Then he was spreading the message of Mahatma Babaji. And who is Mahatma Babaji? Mahatma Baba love is supreme, is eternal, is infinite. Because of this, Mahatma Baba decided to keep the same body because he has to serve. First service is to demonstrate there is no mortals, there is no mortality. Then Mahatma Baba demonstrated immortality. Therefore he kept his body as such undecayed. Then Paramhansa Yogananda should demonstrate the same effect of immortality. Just before entering into Mahasamadhi, he advised to all people of the world that they should follow Mahatma Gandhi because teaching of Mahatma Gandhi is the same. What is teaching of Lodi Mahasaya, teaching of Gyanatarik Tesagiri, whatever lessons given by Paramhansa Yogananda is the same that is teaching of Mahatma Gandhi. After that, when he left body remained undecayed. This body will remain undecayed. This was planned by Mahatma Babaji. Because of this great incidents, Kriyayoga will spread non-stop. And after that, he forecasted, he prophesied, "O India, I will be there." Because Paramhansa Yogananda should come India. Because he worked 32 years in USA, everywhere. And he thought that it is not so easy to spread the Kriyayoga worldwide by working in USA, that he has to work in India. Therefore he decided, "O India, I will be there." India is a nation, greatest spiritual country, greatest liberty. This India is called Mother India. India never wanted I should become the greatest. India have one desire: if I am rising up, if power of India is going up, then India wants that all nations should go up. If there is a huge knowledge is in India, and knowledge is in awakening form, then what India celebrate? Let all nations should have the same. If India is going to be rich, what is the aim of India? All nations should be rich. Therefore India is called Mother India. And India is honored by all nations of the world. How you will experience this honorable state? Suppose that I have to go India. I cannot live. I want to go India immediately now. Oh, I can't go. This is big ocean, Indian Ocean. Oh, let us say this is Indian Ocean. By touching the ocean water, Indian Ocean, I am touching India. Such great love offered by all nations of the world. Indian Ocean name is given by all nations. Now India is going to up in the same condition, but problem is that here bureaucracy, so-called IAS, IPS officer. Because of them you cannot make India rise up. I can tell you this clearly. I can give you with thumb impression the service of Kriyayoga ashram at the bank of Holy Ganga Prayagraj is unique. This is the first ashram in the world like Paramhansa Yogananda, what he established in SRF, Mount Washington, and Yoga Math in Ranchi. When Yogananda was there, what attitude he was having the service, same is done here. We don't offer any ARTI because we don't pay any amount in the ARTI. You will feel something not good. You will feel low. And I created a condition that you are feeling low because you did not able to put some money in the ARTI. We do not put any donation box because when you come and visit to me, if you are not able to put something donation box, you will feel low. And I created a condition, that condition making you feel low, then I will be also feeling low at the same time. Then my and your vitality will low.
Therefore, in this Kriyayoga ashram, there is no any donation box. We never ask anything from you. We supply all services as Paramhansa Yogananda was supplying in USA when he was there. Everything is free. Teaching is free. Living is free. Food is free. If this ashram is doing unique work and we give in a writing, legal paper writing, if follow, your 100% sickness will go. One honorable great medical doctor came in the Kumbh Mela period. That doctor said, by seeing the YouTube of Kriyayoga, what I offer a service, that doctor was able to cure his very deep-rooted cancer. Then I did not believe. I told me, show your certificate that you are doctor and show me your medical report that you are having cancer. That was third stage of cancer. Inside throat. Cancer disappeared. One cancer was present in one monk of the Kriyayoga ashram, who is serving in Canada at present. That cancer disappeared. For this is the ashram, bring your legal paper. I will write that there will be 100% cure. I will put my thumb impression. Same thing was done by Paramhansa Yogananda and Swami Giri. Even this ashram is working such nicely. And the Kumbh Mela, 29th January, there was a stampede. Many persons have great fear. Something happened. Then Police Commissioner of Allahabad, Mr. Gamaji, he requested me to open the full ashram for the public, otherwise there will be 1,500 people will die at the GT road. I told I will open it, but many persons who doesn't want this Kriyayoga should spread, they will damage property. And he said he is going to repair everything. I opened it. Around 20 lakhs rupees damage. All agricultural land and the glasses of the windows and hand pipes. I have message of Gamaji. I have his recording. He told he will visit and he will offer the payment. He never visited. Offering the expense what was damaged, forget it. He never just came. He never did anything. At present, he is IG in Lucknow. I am telling it. He is the IPS. He was not able to visit this ashram. He was giving such great service. At this Mahatma Gandhi Marg in Kumbh, Nagar, which is Mori Marg, Mahatma Gandhi Marg. He have opened our camp. Otherwise, there had been 700-800 casualties. We saved here. But DM Kumbh Mela, Mr. Vijay Kirananand, and other IAS, IPS, they never visited, they never came. Therefore, if they cannot recognize this service, our service we are giving. I traveled 2/3 of USA, 3/4 of Canada, Europe, Australia. Just I visited Switzerland, Geneva, Paris. In all our world program is going on. But these IS, IPS, they don't have desire to visit and to help, to give protection, never. And they are not meant to serve India. They are meant to get the position and do something unnatural to increase their values, to store their money, to do everything for their own welfare, for their family. Therefore, India should delete this education of IS, IPS. And they will be active. You cannot make India great. I am telling you clearly. Same IS officer Vijay Kirananand in 2018-19. At that time there was Commissioner Ashish Goyal. They tried their level best to put him in the jail. They couldn't do it. By the help of somebody, educators of the High Court and some others, they put case against me. That is the worst case.
But a lower stage of police like inspector and others, they were knowing this is the false case. They never came, they never visited. And High Court Honorable Judge, they gave me full protection. I was not knowing any judge who gave me protection. Vijay Kriyayoga denied to give the land in the Kumbh Mela. Honorable High Court, he gave such a strong order that he has to give land in 2019. Again this year he denied to give the land. Somehow with the power of my Gurudev, with your love, we got the land. This is Mahatma Gandhi Marg. There was here road. Vijay Kriyayoga, he said to the PWD to remove that road. I am going to put this road. I will make road, RCC road, but you have to pay. 22,000 crores rupees were spent. 30 bridges was there. No bridges was working. Why? Why cannot make any 15 feet this road at the Mahatma Gandhi Marg? Because you don't love India. You don't love spirituality. You do not love Sanatan Dharma. You do not know Sanatan Dharma. Because you are IS. You are designed yourself. You think that you are greatest. You have great knowledge. No, you don't have any knowledge. I am telling you, regarding you take the oath that I am working for protect the constitution of the nation. Give me my Samsung phone. I am reading one line. Tell me anyone, any honorable judge of the Supreme Court, Chief Justice or High Court Chief Justice, any honorable judge of India or anywhere in the world, or any bureaucrats, maybe IS, IPS or anyone, Prime Minister, President, or Governor, Chief Minister, let them know that they don't know what is Constitution of the nation. They can't explain it. I'm giving one line, just try to listen it. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of individual and unity and integration and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. You know what this means? They don't know any meaning. Sovereign means, what is the meaning of sovereign? That India will be king of its own. No other nation will rule it. That is first thing. We call it a sovereign. S-O-V-E-R-I-G-N. It means my India is king of its own. I do not want to be governed by any other nation. Tell me, in Sanatana Dharma, who is king? God is only king. India cannot say that I am king. India will never say I am king. Then what kind of constitution of nation is this? You don't understand it. Next you think. India will not be controlled by any other country, will be independent. What is independent? All nations are connected. All nations should help each other. No nation can say, I am independent. What is Sanatana Dharma? Keval state. What is teaching of holy science? That all creations of the cosmos, they are perfectly linked with each other. You cannot separate them. India is one with the Pakistan, India is one with the Afghanistan, India is one with the Bangladesh, is one with the America and Canada. You cannot separate the nations. Now what kind of constitution we are going to take solemn vow, which we do not know it? Tell me anybody in the world that you understand this. We don't understand this.
And socialism, what is meaning of socialism? If I have earned this some wheat and rice or corn, I have to distribute to all. It is not my own property. If I am getting salary, 10 lakhs rupees per month, that is not my salary. I need only that much amount which I need my personal, this money goes to others. This is called the socialism. Tell me, who is practicing socialism? Any judge? No. Any bureaucrats? No. Any leader? No. Then what kind of we have the oath? We are taking constitution of the nation. This is constitution of the nation. We take the oath. I will work according to this. This is correct, but tell me what is this? Not a single line anybody knows it. I say clearly, if judges will understand it, they will not take salary. If bureaucrats, they will understand, they will not take salary, they will work free of cost. If Prime Minister, if President, if Governor, if Chief Minister, MLAs, MPs, they will follow constitution of the nation. They have not to take salary, they have to work freely. Everything will come automatically, but they can't do it. All the false commitment is offered. Now, this Mahatma Gandhi Road, this bank of the Ganga Yamuna Saraswati, this is the bank of the Triveni, bank of the Sangam, has decided to practice this. Criticize no one. I am not criticizing. If I have broken my leg, if X-ray machine is telling that my femur is broken, that X-ray machine is not criticizing, he is giving me the sign symptom, I have to fix my bone. Then you have to fix judiciary, you have to fix bureaucracy, you have to fix legislation, you have to fix Prime Minister and President and Governor and Chief Minister. If you are not deciding it, your blood pressure will never go. You will have fear. You have all kind of constipation. You have illness and sickness. You will have weakness. You will have fear all the time. All purpose has to think it. Think sincerely what I am telling it. Do not criticize any judges, any bureaucrats, any leader, because they don't know it. There is no teaching. Now everybody has to get teaching of Mahatma Babaji. What is teaching of Mahatma Babaji? Very simple. That Param Brahma, omnipresent spirit, is manifest in the form of all creations. Then your mother, your father, your brother, your sister, your husband, your wife, your children, accept them, the manifestation of Param Brahma. What is further? In Param Brahma, there is all knowledge, all power, all peace and joy and everything. Then do not say that my child is weak. Then we have opened a school college. Grade A, grade B, grade C, pass and fail. What is this education? Against constitution of the nation? Against real teaching of Mahatma Babaji? Therefore, there is stress in the school college. There is stress everywhere. Who is very well educated, they have more stress. Okay, let us, I want to become doctor. Tell me honestly, any doctor is thinking to give free service? No. The medical education is so costly. If somebody is paying 2 crores rupees to complete his degree and he's taken loan, he has sold his house and everything, and they have to get that money. Then why education system is not free? How these medical students, how they are going to repay their money? What they have taken from someone? To give the fees for completing education. Therefore, you remember, you cannot get health by medical education. And doctors are increasing, medicines are increasing, patients are increasing. In Kriyayoga ashram, there is no patient. We have children from 3 years age up to the 14 years. We have all ages here. There is no any sickness. Kriyayoga ashram is free of all kind of sickness, tension, worries and fear. Because they are trying to follow teaching of Mahatma Babaji. You think that if all will be doctor, there will be health? No, then all will be sick. Because pharmaceutical companies, they are trying to remove your
sign symptom. What is teaching of Mahatma Babaji? In this, chapter number 3 is called the procedure technique. I am opening it. Matra sparses titiksha tapa. You have to practice tap, your all problem will go. What is tapa? Matra sparses titiksha. What is matra spars? Asparses. When sound, you are listening sound, appreciate all sound. Oh, I am good musician. I am doing good harmonium. You are having good tabla. You are having good this, good that. Then you are going to use it, and some child is coming, he is doing tuck tuck. He is making noise in this way. If some child is coming, he is making sound. Oh, don't make this sound, you are disturbing my music. That is not. Matra sparses all kind of sound base what you are issuing. Each and every sound wave which is storehouse of all knowledge, power, peace and bliss. How you can say this sound is good, this sound is bad? In the same way, visual, each and every structure, Parabrahma is present in all forms. Within each and every structure, there exists all kind of power, knowledge, peace and bliss. This is called the constitution of nation, constitution of the nation head to toe, constitution of nation externally like India or any other nation. Then what you have expectation that I have selected this person is MLA and MP, he is going to be Chief Minister, Prime Minister and Home Minister, this and that, they are going to solve the problem. They can't solve it, it is not their mistake. They don't have education. Never criticize Prime Minister, never criticize Home Minister, never criticize anybody, never criticize any judges, no bureaucrats, because they don't have teaching. Then you have to demonstrate this teaching. Practice sincerely, demonstrate you have no tiredness. Demonstrate you have huge things, but you are able to distribute freely with no obligation. Suppose that you have 2,000 people you have to feed. Do not worry. Try to decide you have to feed 2,000 people, automatically things will come to you. Never ask anything, it will come automatically. What Paramhansa Yogananda demonstrated. All donations were coming him automatically. What our Kriyayoga demonstrates. We never ask anything from anyone, automatically it comes. In Kumbh around 1,000 people were eating per day. When you see here and Karchana and the Mela all over, this was per day. From where this will come, we don't know it, but it came. Therefore, remember, if you are criticizing anyone by listening my lecture, then you are not understanding. Criticize no one. It is not mistake of IAS, IPS, they don't have education. What they have education, that is false education, incomplete. Incomplete means false. Everybody need education of holy science. That is very simple. Simplest of simple education. Try to understand when this interpretation of holy science given by Paramhansa Yogananda means Sanskrit Sutra and biblical passage given by Gyanatarik Teshagiri. Its translation in English is given by Paramhansa Yogananda. And the autobiography of Feti written by Paramhansa Yogananda. He written a Sarf lessons, Vices lessons, so many work he did it. Like at the last part he is telling, follow Mahatma Gandhi. I am going to tell something on the board. Suppose that you want to say something, that somebody should write it, then you want dedicated people should be able to stay with you all the time. Then who are the most dedicated people with Mahatma Gandhi? Manu. At the age of 14, she offered to go to the jail for this liberation of the India. She was biggest person who accepted to go to the jail to make India free at the age of 14.
The man who lived 17 months constantly with Mahatma Gandhi. One day, Mahatma Gandhi used to teach her. At the night too, Mahatma Gandhi getting a thought, oh, get up, try to write this. At night one, oh, write this. He has given all teaching. That teaching is packed in this Bapu, my mother. There are so many books, you can have it. Therefore, Bapu, my mother, and end of an epoch, and one chapter 44 in autobiography of Yogi explains about the Mahatma Gandhi, how to follow him. What he written in Bapu, my mother, what his biggest service to nation is a spinning wheel. This is the spinning wheel, structure of a spinning wheel. This is the structure, rough structure of a spinning wheel. We try to rotate this. Then there's a cotton, then we are going to put it here and again coming back. This is all the time going on with one hand. One hand will keep on moving. Next hand will keep on moving like this. This is our head, this is our spine. When you are sitting, put your mind in the head, keeping eyes closed at Bhrumadhi, whatever you see in this space in front of Bhrumadhi, whatever color rays you are seeing it, try to just have this thought, this rays is revolving in the head, and the same rays is moving up to the coccygeal point and returning back. This is all the time going on. Try to imagine it half an hour. You will get peace. Fear will reduce. Vitality will be more. This is called a spiritual spinning wheel. You can practice all the time. When you are in the flight, when you are in the bus, you are in the train, wherever you are, you can practice this. Spinning wheel, great activities. After doing this, you will get an idea. Suppose that you have 20 persons in the family, or you have 5 persons. Therefore, joint family always good. If out of this 5, 2 are not able to work, very hard work like agriculture here and there, we can purchase them a spinning wheel. They can sit, they can take cotton, they keep on making thread. Therefore, we have to protect our skin. Our skin health is maintained when we have real cotton cloth. Real cotton cloth is not available in the market, because when you purchase, you don't like it. It is mixed with the terrain, with the petroleum product, and it is very costly. Therefore, suppose there are 5 people. If 1 people 1 hour, everybody 1 hour, they are having this practice of a spinning wheel, making thread. You can store a lot of thread in 1 year. Each person will have 3 sets cotton dress, that you are protecting your skin. Now, what your skin is telling? Oh mother, in this word, this is the word, this is the wish. No can love me. In this word, whatever mind and wisdom is there, soul and heart there, they don't know how to love skin. Where there is a pure loving love. When here consciousness is realizing, my skin is purest of pure structure. When there is true loving to me, if any are giving true love to me, then I want a dress, I want cotton dress, home spun. If I am using that dress, my skin is very happy, very good. I have to make my skin happy, then skin will say, I want to live with that person who is helping me. What is that music is there? In this word, mother, no can love me. Mind is blind, wisdom is not perfectly evolved, soul and heart not evolved. Therefore, they can't love me, skin is telling, because they do not know how to love. When there is pure loving love, when there is true loving to me, my soul longs to be. The soul of skin is going to live with that person who is giving perfect love to the skin.
then we want home spun cotton. I'm going to try it, how to use this in our ashram. If we'll be successful here, we all person will get 3 sets minimum dress. Then we can demonstrate, oh skin, I love you very much. And I love you more when I see you. Your beauty is infinite. When I feel you, when I tense, relax, feel you, what I feel, this is purest of pure existence. When I feel it, I say Parabram has become the skin. By practicing this, we demonstrate, oh skin, I love you. The skin will remain healthy all the time. This is the important point you should remember. Now time has come that India has to rise. Do not criticize anyone. Do not criticize Prime Minister or Chief Minister or President or any MLA MP. Do not criticize any judge, anyone. Because they don't have education. They not have real education. What education they have it? Oh, Ambedkar, he made constitution of the nation, but at the last he said this is not correct. He became Buddha. Buddhism, accepted Buddhism. I belong to the SC class. If I am SC class, ST class, but I never accept Buddhism, then I am not following of Ambedkar. By simply saying that Ambedkar had done great work, he made constitution of the nation, but at the last he told it, this is not correct. I don't believe in this. He said it. And he accepted to become Buddhism. He left. He said that I am not Hindu, I am not Muslim, I am not Christian, I am Buddhist. Tell me that how many SC in India decided to become Buddhist? No one. Then they don't follow Ambedkar. Still we have to love them because they do not know how to follow Ambedkar. If you do not know how to protect your skin, your eyes and ear and nose and tongue and gums, how to protect your bone and muscles, how to protect your lungs and heart, how to protect your digestive system, and how you can have expectation that we can follow Ambedkar. Nobody can follow Ambedkar. You have to follow yourself first. How I have to follow myself? Practice this holy science. What I request all of you, just practice and practice. I am going to give you practice again. This spinning wheel, spiritual spinning wheel practice within our own self. I am going to give this practice, keeping eyes closed. Whatever you see in front of the forehead, that color radiation, try to have this kind of thought. The radiation is roaming inside head, and same radiation is going in the spine and coming back. Two things are happening all the time. One is rotating here, some are coming and going. Try to imagine this sitting in the chair or on the ground wherever you are. Then after that you will do the same radiation flowing in the leg, in the arms, everywhere. By practicing this you will realize blood pressure is reducing, diabetes is disappearing, immunity, vitality is increasing. Therefore I am going to give practice in English. After that you are going to listen one nice music on Gandhiji Marg. Music will be offered by these angels. We are determined to demonstrate my India as a mother. If India power will increase, I want all nations should increase their power. India is going to be rich, I want all nations should be rich. India is going to celebrate peace, I want all nations should celebrate peace. India like Mother India, India wants that all nations should grow together. This is the greatness of India. Therefore, Paramhansa Yogananda said, "O India, I will be there." Now let us practice few minutes. Now we are ready to practice teaching of Mahatma Babaji.
Teaching of Mahatma Baba is widely spread by Paramhansa Yogananda in all over the world. Before entering into Mahasamadhi, Paramhansa Yogananda advised, follow Mahatma Gandhi. What is the advice of Mahatma Gandhi? You have to practice spiritual practice. What kind of spiritual practice? Spinning wheel. And he was telling to Manu, granddaughter, spinning wheel practice is the greatest service to nation. Head to toe is nation. We are ready to practice spinning wheel activity within our head to toes. Feel head, a round structure, like a wheel. This wheel is connected to spine, that is the long structure. Try to see structure of spinning wheel. It is like this. In front of forehead, whatever we see, various colored rays, junction of light and darkness. These rays are rotating inside head. Observe, these rays are rotating inside head. The same rays we observe in the space in front of forehead. Same rays are descending inside the spine, going up to the end coccygeal point, again returning up. Same, the color radiation is moving inside the spine and the head all the time. Color radiation is filled in the spine and the head. Try to visualize this. At the same time, practice head to toes is presence of Parambrahm in this visual form. Tense, relax, right leg, left leg. Right arm, left arm. Back, right and left. Abdomen, chest, neck, face and head. Feel head to toes more and more. Accept presence of head to toes is presence of Parambrahma. And in this, there is a spiritual spinning wheel structure, head and spine. Have deepest concentration within head and spine. Within head, all colored radiations are rotating, revolving, rotating. The same is rotating, revolving inside the spine. Try to visualize this. At the same time, feel head to toes. Place both palms on the posterior surface of head. Have deepest awareness to observe head and spine. Head is a round wheel. Spine is the long structure. In front of the forehead, what we observe color radiations. These color rays are revolving and rotating inside head and spine all the time. At the same time, we tense, relax, right leg, right arm, back or right and left. At the same time, curve head and spine towards right, left, backward, forward, slowly. Feel head and spine more and more. Within head and spine, the color radiations are revolving and rotating all the time. Same color radiations are entering into both legs, both arms, back, abdomen and chest. Practice this sincerely. You will realize there is a synthesis of element of peace and joy, element of power and knowledge within head to toes. We are curving head and spine towards right, left, backward, forward, slowly. During this movement, have this visualization that within head, which is a wheel-like structure, and within a spine, elongated structure attached with the wheel, there is a continuous revolving rotation of color radiations.
when we practice with the highest devotion, we will realize the synthesis of power, knowledge, peace, bliss, immortality within each and every part of head to toes. Now bring arms down. By repeated practice, we will understand, not by listening and reading. Now we are ready to understand. When we are twice born, then we will understand better how to practice second birth. That is very easy. Suppose that I am seeing all of you in this Zoom session. If you are added it, if there is a H2O molecule, if add one more hydrogen, it is H3O. This is the new birth. When I am looking at you, if my devotion is increasing in observing your presence, then every moment I am new. Like this I was not before. If I am increasing my divine love for all of you, if intensity of love is increasing each moment, then each moment I became new. When I realize each and every moment I am new, this is called second birth. And I will believe in this. Where is kingdom of God? And within head to toe there will be kingdom of God. Then we want to meet God. How to meet? You have to enter into kingdom of God. How to enter? When you work like water, what is the humbleness of water? Detail I will tell, but listen only little today. Water is having no ego. You can throw water in the sand, all right. Throw water in the different clay, all right. Throw water anywhere or drink water, have no complaint. But water will remain water. That's called the humbleness. You have to live. Airport, that is your home. A railway station, that is your home. Inside flight, that is your home. Inside train, that is your home. Inside car, that is your home. Inside anywhere, that is your home. On this planet, wherever you are, that is your home. Do not say that this is my home, this is not. That is called living like water. At the same time, feel head to toes, what we feel is presence of formless, omnipresent God. When you practice this, you will know how to enter into kingdom of God and meet God as a king. Then there will be no fight that I want to become king. I want to become prime minister, president, chief minister, governor. There will not be fight. Nobody will fight for chair. This is what we want India should be. And I requested these angels, little angel, they will give you little music about this Mahatma Gandhi, this Marg. This music is offered. And please listen, and during this, feel head to toes more and more. This music was synthesized when I decided to have a procession in the name of Mahatma Gandhi, here Mahatma Gandhi Road. I wanted there should be music. I requested my Gurudev, Swami Giri, whatever he did. I wrote this music at 5 a.m. in the morning. Same you are going to listen here. This I will explain further in detail. Just try to listen it. जल तत्व ही विनम्र तत्व है। जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। हम विनम्र रहें और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। हम विनम्र रहें, हम विनम्र रहें और शाश्वत विनम्रता से घिरे
गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मूल्य मार्ग है, यही तेरा मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है, इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है, विनम्रता की तरंगों का ये निकास है, विनम्रता की तरंगों का ये निकास है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मेरा मार्ग है, यही तेरा मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। देखिए, मूलाधार ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है, जहाँ पर सहदेव की शक्ति जगती है जब हम महातार बाबा की शिक्षा पर चलते हैं, जो होली साइंस में लिखा है। फिर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, यहाँ जल तत्व है, जो नकुल का स्थान कहते हैं। जो ये अपना कोई ये फिक्स कुल न बताए कि हमारा ये कुल है, हमारी जगह है। ये गांव में नहीं कूला कहते, नहीं ये कूला है, प्याज का कूला है, लहसुन का कूला है, आलू का कूला है, धनिया का कूला है, मतलब एक जगह। और जब सब जगह अपनी है, नहीं कोई अपनी नहीं है, जब ऐसा करते हैं तो विनम्र हो जाते हैं। और सिर्फ विनम्रता से शक्ति आती है, ज्ञान आता है, शांति आती है, अमरता आता है, सब चीज वहीं से होता है। इस गीत का यही भाव है। हमारा आपसे निवेदन है, ये ऊंच और नीच, ये छोटा और बड़ा, ये भाव एक ऐसा भाव है जो झगड़ा लाता है, बीमारी लाता है, तनाव लाता है। हम कहते हैं छोटी उंगली है, बीच वाली बड़ी उंगली है, ये विचार बीमारी लाएगी। कोई छोटी बड़ी नहीं है, परब्रह्म में सभी रूपम प्रकट हो रहे, सब एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। What I want to explain is, the moment of this thought of division, little finger is smallest, middle finger is largest. This concept is called concept of illusion. What is real concept? Parambrahma is manifest in the form of fingers. You cannot say which is longer, which is shorter, which is great, which is small. If you have this kind of comparison, try to remember, we will develop fear inside, tension inside, problem inside. This little service what I offered you with my devotion, let us bow down to our devotion in teaching of Mahatar Babaji, which is packed in holy science, which we know in the form of Kriyayoga.
Now we will sit and open eyes. जलता तू ही विनम्र तत्व है, चलता तू ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। चलता तू ही विनम्र तत्व है, चलता तू ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। हम भी नम्र रहे, हम भी नम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। हम भी नम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है। हम भी नम्र रहे, हम भी नम्र रहे और शाश्वत विनम्रता घिरे रहे। हम भी नम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है। इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है, इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है। विनम्रता की तरंगों का ये विकास है, विनम्रता की तरंगों का ये विकास है। यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है।